Okay. So this is the first paper, May, June 1. Solve the equation 4 sin theta plus tan theta is equals to 0. कैसे करना है हारिस? मेरे साथ करना है आपने, ठीक है? So the identity for tan theta is 4 sin theta plus sin theta upon cos theta equals to 0. And then we have 4 sin theta into cos theta plus sin theta equals to 0 whole divided by cos theta. So 4 sin theta cos theta plus sin theta is equals to 0. Now take sin as common. So inside will be 4 cos theta plus 1 equals to 0. So sin theta equals to 0 and 4 cos theta plus 1 equals to 0. Now you know that whenever sin theta is 0, this is considered as the special case, okay? If you look at the graph of sin theta, so the graph of sin theta is this. So sin theta is 0 on these points. And no point is included in your domain because your domain is from 0 to 180. And sin theta is 0 on these 3 points, but they are all not included in the domain. So you will solve the next. Cos theta is minus 1/4. So now write as cos is negative, so cos is negative in second and third quadrant. So these are my possible answers. So first let's find the basic angle. Basic angle will be shift cos inverse of 1 divided by 4. So my basic angle is 75.5225. So this is my possible answer, this first one. So my theta will be 180 minus basic angle. So which will be 75.5225. So 180 minus answers. So my theta will be 104.4775. Okay. Or we can write it as 104.5 degree. This is my final answer. We can find the next answer also. We can find this angle, but as you know that our domain is still 180. So this is out of like bigger than 180. So let's say if your domain was 360, then you have to find the second angle also, okay? But for this question, you have only one answer, and that is theta is equals to 104.5 degree. Moving on to the next part, next question, find the first 3 terms in the expansion. Okay, so just remember the binomial expansion theorem. It says that 2 plus 3x to the power 4. So first 3 terms will be 4c0 a raised to power 4 and 3x raised to power 0. So 4c0 is 1. 2 raised to power 4 is 16. So 16.
and then 3x raised to power 0 is 0. Next term is 4c1, 2 raised to power 3. And 3x raised to power 1. So 4c1 will be 4, and this will be 8, and then 3x. So 8 times 4 times 3 will be 96x. And then 4c2, 2 raised to power 2, and then 3x raised to power 2. So 4c2 is 6, 4c2 is 6, and then 2 raised to power 2 is 4, and 9x square. So 6 times 4 times 9 is 216x square. So write this in the form of 16 plus 96x plus 216x square. So these are the first 3 terms of above expansion. Find the first 3 terms in the expansion in ascending power of x. Now we have the second one. So 5c0, a raised to power 5, b raised to power 0, and that will be just 1. Then 5c1, 1 raised to power 4 minus 2x raised to power 1. So 5c1 is 5 and minus 2x. So the answer will be minus 10x. Then 5c2, 1 raised to power 3 and minus 2x raised to power 2. So 5c2 is 10. This will be 4x square. So 40x square. So 1 minus 10x plus 40x square. These are the first 3 terms of this expansion. Hence, find the coefficient of x square in the expansion of this. So actually, the first one was the first part. So let me write the answer of first part. 16 plus 96x plus 216x square. And then the answer for the second part was 1 minus 10x plus 40x square. Now just multiply and let's see that which term will give you x square. So when 16 will multiply here, 96 will multiply with 10, and 216 when multiplied with 1. So let's multiply 16 with 40. So 16 times 40 will be 640 x square, and then minus 96 with 10. 96 with 10 will be 960 x square, and then 216 times 1 will be 216 x square. And now 216 plus 640 minus 960. So minus 104 x square. So coefficient of x square will be minus 104. So coefficient of x square will be minus 104. Now this part is very interesting. अहमद, मैं रिसेंट पेपर कर रहा हूँ 2023 का, तो मेरे साथ साथ आपने करना है, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि आज 3-4 पेपर करवा दूं आपको 2023 के। अच्छा, जो टॉपिक मुझे लगता है कि अब ये जिस ट्रांसफॉर्मेशन है, ये थोड़ा सा मुश्किल बच्चों को लगता है। इसी तरह एक और मैं आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, उसमें सर्कल है, तो वो भी बच्चों ने इतना अच्छा नहीं पढ़ा होता। तो जो इस तरह के टॉपिक्स होंगे मैं थोड़े से ना साथ पढ़ा भी दूंगा, तो मे भी आपका पेपर 1 और 50 मिनट में खत्म ही ना हो, ठीक है? क्योंकि मैं एक्स्ट्रा पढ़ा भी रहा हूँ पेपर के दौरान। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन ना।
अब कहते हैं द डायग्राम शोज ग्राफ विद इक्वेशन y is equal to f of x and y is equal to g of x. ठीक है. Describe a fully sequence of two transformations which transform the graph of f of x to g of x. तो हाँ, लेट मी टेल यू कि हाँ, ट्रांसलेशन सबसे पहले क्या होती है. Translation has two types. Horizontal translation. Horizontal translation says that if अगर हम मल्टीप्लाई करें x फंक्शन के x में से कुछ सब्ट्रैक्ट करें, ओके, द फंक्शन विल मूव टू राइट. ओके. और अगर हम ऐड करें x के अंदर सम k, सो फंक्शन विल मूव टू लेफ्ट और ग्राफ विल मूव टू लेफ्ट. तो फिलहाल अगर आप देखो स्टूडेंट्स, एक ये शेप है और एक ये शेप है, तो यू कैन सी के हमसे वो पूछ भी रहा है कि एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स पे कैसे आए. सो यू कैन सी दैट दिस इज शिफ्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट. सो व्हाट यू विल से कि कोई नंबर इसमें ऐड हुआ है. ओके. सो नेक्स्ट, और अगर हम कोई नंबर हम इसमें से लाइक सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो इसको हम लिखते कैसे हैं वो जरा गौर से देखिएगा. ऊपर वाले को हम लिखते हैं k0 और नीचे वाले को बच्चों हम लिखते हैं -k0. ठीक है. अगर x के अंदर हम कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इसको लिखने का ये तरीका होता है, और प्लस कर रहे हैं तो ये वे होता है इसको करने का. ठीक है. तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इफ यू लुक एट एफ ऑफ एक्स, तो जस्ट आप एजेस को देखो. एजेस का मतलब ये है कि लेट्स सी इफ आई सी दिस एज, सो दिस एज इज शिफ्टेड 1, लुक एट दिस 1 2 3 4 5 6. तो ये देखें 6 यूनिट्स लेफ्ट पे शिफ्ट हुआ है, ऑल्दो कि वो थोड़ा सा नीचे भी है, बट its position is 6 units left. अब टू कंफर्म कि क्या 6 यूनिट्स ही मूव हुए, लेट्स सी द अदर पॉइंट. नाउ लुक एट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स. सो दिस इज द पॉइंट 1 2 3 4 5 6. सो यू कैन सी दैट ये भी मूव हुआ है 6 यूनिट्स इधर, ऑल्दो कि वो ऊपर है, फॉरगेट अबाउट इट. सिमिलरली लुक एट दिस एज 1 2 3 4 5 6. सो देखें ये वाला एज मूव ऑन टू this position, although it went up. Okay, so the last is this point. So now 1 2 3 4 5 6. तो ये 6 यूनिट्स लेफ्ट मूव हुए, ऑल्दो कि ये 6 यूनिट्स लेफ्ट मूव होकर नीचे भी है. तो इतना तो मुझे समझ आ गया कि हर एज आपका मूव टू लेफ्ट 6 यूनिट्स. ओके. तो मैंने क्या बताया था, जब भी लेफ्ट 6 यूनिट हो तो आपने क्या करना है, इसका आंसर आपने कैसे लिखना है, -6 0. ओके. अच्छा, अब मैं क्वेश्चन को आंसर नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं जस्ट वो चीजें पढ़ा रहा हूँ. वैसे ट्रांसफॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा है, जो इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन यूज हो रही है, जस्ट आई एम गोइंग टू टीच यू दैट. अच्छा, अब लेट मी टीच यू द सेकंड वन, एंड दैट इज नोन एज वर्टिकल ट्रांसलेशन. सेकंड ट्रांसलेशन इज वर्टिकल ट्रांसलेशन. सो वर्टिकल ट्रांसलेशन, वर्टिकल ट्रांसलेशन सेज दैट अगर हम फंक्शन के बाहर कुछ सब्ट्रैक्ट करें और हम कुछ ऐड करें, ठीक है, फंक्शन पूरे में से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें या कुछ ऐड कर दें. ठीक है. ये क्या था पहला, ये क्या पहला कह रहा था कि एक्स के अंदर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें. ये क्या है, फंक्शन पूरे के बाहर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें. तो ये कहता है, आपने पहले पढ़ा भी होगा ओ लेवल्स में, कि इफ यू सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम फंक्शन, द फंक्शन विल मूव डाउन. ओके. इसमें रिवर्स है, इसमें अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो तो डाउन ही मूव करना. सो फंक्शन विल मूव डाउन के यूनिट्स. ओके. और इसको हम लिखते हैं ऐसे हैं, 0 k. ठीक है, विद माइनस. और इसकी सेकंड क्या होती है, सेकंड सेज दैट इफ फंक्शन f of x प्लस k, सो फंक्शन क्या होगा, मूव करेगा अपवर्ड. फंक्शन विल
मूव अप, और लिखेंगे हम कैसे, 0k। अच्छा, लेट मी टेल यू कि क्या ये वर्टिकल ट्रांसलेशन इस पे हुई है या नहीं हुई। अच्छा, बच्चे सोच रहे होंगे सर ये हुई है, देखें ये ना, ये चीज ऊपर शिफ्ट हो गई है इधर। तो मैं बताता हूँ क्या मतलब है इसका। बच्चों अगर आप इस कॉर्नर को देखो, इस कॉर्नर में कितने ऐड होके ये बना है, मैं बताता हूँ। देखिए, ये इधर शिफ्ट हुआ 1, फिर इधर शिफ्ट हुआ 2, फिर इधर शिफ्ट हुआ 3। चले मान लेते हैं, दूसरे को देख लेते हैं। ये इधर शिफ्ट हुआ 1, ये इधर शिफ्ट हुआ 2, ये इधर शिफ्ट हुआ 3। सो सिचुएशन कुछ ऐसी बन रही है कि फंक्शन के अंदर 3 ऐड होने जा रहा है, बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नाउ लुक एट दिस कॉर्नर, ये देखें, अगर ये ऐड हो रहा होता, ऊपर ही जाना होता, तो आप इमेजिन करें, ये नीचे तो ना आता ना, ये तो नीचे आ गया। तो इसको कहाँ होना चाहिए था, इस एज को, 1 2 3। तो ये जो आपका ये वाला एज है ना, तकरीबन इसको यहाँ पे कहीं पे होना चाहिए था। तो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि इस पे वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं हुई। अगर वर्टिकल ट्रांसलेशन होती तो हर एज के ऊपर होती। दो एज तो आपके 3 यूनिट्स ऊपर जा रहे हैं, लेकिन ये वाला एज आपका 3 यूनिट्स ऊपर तो नहीं जा रहा है, तो नीचे आ गया, इधर पहुंच गया। सिमिलरली ये वाला कॉर्नर देखें, लास्ट कॉर्नर, इसको टेक्निकली 3 यूनिट्स ऊपर जाना चाहिए था अगर आप वर्टिकल ट्रांसलेशन कहते हो, बट ऐसा नहीं हुआ है, ये तो नीचे आया है। ये देखें, ये 3 यूनिट्स नीचे होकर इधर मूव हुआ है। तो स्टूडेंट्स, वर्टिकल ट्रांसलेशन मैं फिलहाल इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट ये वर्टिकल ट्रांसलेशन इसके ऊपर नहीं लग रही, इसके ऊपर जस्ट हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन लग रही थी। अब ये किस तरह डिड्यूस कर सकते हैं? सॉरी अहमद, किस किस तरह डिड्यूस कर सकते हैं? मैं बताता हूँ ना। देखिए, ये आपको समझ आ गया हॉरिजॉन्टल वाला, कि जी सर, ये तो सही। हर एज के अंदर ना 6 यूनिट लाइक सब्ट्रैक्ट होके लेफ्ट साइड पे मूव हुए हैं, ऐसे ही है यस सर। हर। तो लेकिन अगर हम इसी हर एज के अंदर कोई फिक्स कांस्टेंट ऐड करके हम यहाँ ले जा सकते हैं, द आंसर इज नो। क्योंकि ये वाला एज देखें जरा अहमद, ये वाला एज ये बन गया, ये वाला एज भी ये बन गया, 3 यूनिट्स ऐड करने से ऐसे ही हुआ है, थ्री यस यूनिट्स सर। ऊपर शिफ्ट हुआ ना। जी। बट क्या ये वाला एज ये बना है? नहीं बना ना। नहीं। तो दैट्स वाई इस पे वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं हुई। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्ट्रेचेस का। स्ट्रेच, ये बेसिकली स्ट्रेच हुआ है। अब मैं वो बताता हूँ उसे क्या स्ट्रेच किसे कहते हैं। स्ट्रेच किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू। स्ट्रेच क्या होता है जी? स्ट्रेच ये होता है, और वो भी मैं जस्ट वर्टिकल पढ़ा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन में लग रहा है, ठीक है। वर्टिकल स्ट्रेच, stretches has also two types, vertical and horizontal. So right now I'm just teaching you vertical, किसी और पेपर में कर लेंगे horizontal भी आ जाएगा, मैं जस्ट रिवाइज करवा रहा हूँ। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फंक्शन हो, और पूरे का पूरा फंक्शन किसी के से मल्टीप्लाई हो जाए, ओके, पूरे फंक्शन को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप क्या कहते हो, दैट इट इज वर्टिकल स्ट्रेच विद फैक्टर के, ओके। अच्छा, मुझे बताने दे इसका मतलब क्या है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि एक एक पॉइंट है 1,3, और इस पे आपने अप्लाई करना है फैक्टर के वर्टिकली। तो बच्चों पता है क्या मतलब होगा इसका? इसका मतलब ये होगा कि इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, अगर आप वर्टिकली स्ट्रेच कर रहे हो अहमद, इफ यू आर वर्टिकली स्ट्रेचिंग द कर्व विद अ फैक्टर ऑफ मुझे कुछ लिखने दें यहाँ पे 2। तो बच्चों पता करना क्या है, इस 2 को आपने उठाना है और जस्ट वाई वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है बच्चों आपने? वाई वाले कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो आंसर क्या आएगा? 1,6। आंसर क्या आएगा बच्चों? 1,6। ये मोर देन लाइक का रट्टा ही है, इसको आपने याद रखना है कि सर अगर ये टू आपका, जी आपको जी, किसका बोला? खुद से एग्जांपल दी है मैंने, अच्छा। कि अगर आपसे कहा जाए कि जस्ट वर्टिकली स्ट्रेच दिस पॉइंट विद अ फैक्टर ऑफ 2, सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई दिस नंबर विद द ओनली अच्छा अच्छा। ठीक है ठीक है। ओनली ओनली वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो लेट मी वन के साथ टेल नहीं? यू, 1 के साथ नहीं, चलें जी, अब एक काम करते हैं ना, अब एक काम करते हैं, ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मुझे कौन लिखवाएगा? सारे के सारे ओरिजिनल कोऑर्डिनेट्स मैं लिखता हूँ। जो ओरिजिनल मेरा एफ ऑफ एक्स है, उसका कोऑर्डिनेट है जी आपका 3,3। चले राइट से लिखना शुरू करते हैं, या लेफ्ट से,
तो सबसे लेफ्ट कोऑर्डिनेट है एफ ऑफ एक्स का -1 कोमा -3, उससे अगला कोऑर्डिनेट है आपका 1 कोमा -1, उससे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है आपका 3 कोमा 3, उससे नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 5 कोमा 3। ओके, नाउ रिजल्टिंग मुझे लिखवाएं, जो आपका बड़ा ग्राफ बना हुआ है इसके जरा मुझे लिखवाएं कोऑर्डिनेट सबसे लेफ्ट वाला, ये वाला। तो ये क्या है? -7 कॉमा क्या था? यस, -6। सिमिलरली नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है? ये समझ आ रही है मतलब आपको बात? माइनस 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 कॉमा, सिक्स किसका था? ये है ना, ये मैं पॉइंट लिख रहा हूँ। जी जी। और ये हाँ ठीक है। ठीक है, ये मस्ट बच्चों Yep, आपने समझना, ये हलवा ये पेपर में मस्ट आएगा यार। सही सही सही। अच्छा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है? वो ऊपर वाला। -5 -2। वो तो हो गया ना, अब वो ऊपर वाला है तो -3 6, -3 कोमा 6, और नेक्स्ट कौन सा रह गया? -1 कोमा 6। ठीक है बच्चों, तो ये आप गौर से देखें। पहले आप मुझे ये बताओ, देखिए मैंने आपको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच बताया ही नहीं है क्योंकि वो लग नहीं रहा, तो लेट इट गो फिलहाल। जस्ट आप ये देखो स्टूडेंट, इज देयर अ फिक्स रिलेशन बिटवीन दीज वाई कोऑर्डिनेट्स? अहमद, आई विल डेफिनेटली आस्क यू। सर फैक्टर्स हैं। और यू कैन से दैट एवरी जी x फैक्टर है 2 every का। y coordinate is multiplied with 2 to get the new coordinate of y. जी। ओके, सो जब मैंने क्या यस सर। बताया था, जब भी आपका y कोऑर्डिनेट किसी फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है? वर्टिकली स्ट्रेच, और वो जो नंबर होता है उसे कहते हो वर्टिकली स्ट्रेच फैक्टर ऑफ दैट नंबर। ओके, ओके, तो लेट मी यस आंसर दिस क्वेश्चन करेक्टली टू गेट द 4 मार्क्स। ये तो मैंने पूरा टॉपिक पढ़ा दिया ना आपको, आपने इसको आंसर कैसे करना था देखें जी। चलें, लेट्स सी के वी कैन से दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। चलें, लेट मी राइट हियर सॉल्यूशन, दिस इज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, लिख दिया करें, आसानी हो जाएगी। पहला आप देखें, इट हैज 4 मार्क्स, सो यू हैव टू अर्न 1 by 1। ओके, सो सबसे पहले मैं कहता हूं कि वर्टिकली स्ट्रेच, वर्टिकली स्ट्रेच विथ फैक्टर, बोलो अहमद, 2। ओके, एंड सेकेंड वन वाज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। क्या बोलूंगा अहमद? हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट, वो जो ऊपर पहले बताया था ये वाली बात, ये आपको समझ आ गई थी कि कर्व आपकी पूरी की पूरी उठा के कहाँ शिफ्ट हुई है, लेफ्ट या राइट? ओरिजिनल कर्व आपकी ये है, दिस स्मॉलर वन इज योर ओरिजिनल। ओके अहमद, तो ओरिजिनल यस अगर सर। लेफ्ट पे शिफ्ट हो तो नंबर क्या करना होता है? ऐड करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है? बोलो। सर ऐड। ऐड, रट्टा मारे बेटा, अगर ओरिजिनल कर्व उठा के इधर शिफ्ट हुई तो एक्चुअली एक्स के अंदर 6 ऐड हुआ है। और इसको लिखना ओके। कैसे होता है? ऊपर -k और नीचे 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली ट्रांसलेटेड 6 यूनिट्स टू लेफ्ट, 6 यूनिट्स टू लेफ्ट। इंग्लिश भी लिख दिया करें और साथ मैट्रिक्स भी बना दिया करें इस तरह। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी यार। सर इसमें मार्क्स ये ए और बी के हैं या फिर वो जो साइड में आपने फैक्टर्स लिखे हैं वो सारे कोऑर्डिनेट्स? नहीं अहमद, ये आपके 4 मार्क्स हैं, सारा कुछ। 4 आउट ऑफ 4। बस ये रेड मैंने जो किया, दैट्स इट। ओके। और ये भी ना करें, ये तो मैंने आपकी हेल्प के लिए किया, अगर आप मार्किंग की खोले ना तो आपको जस्ट ये इंग्लिश नजर आएगी, ये वाली। समझ आ रही है ये वाली? यस सर। ये तो मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया ना, मैं इसकी पिक्चर बना के भेज भी रहा हूँ। तो अभी मैंने एक और क्वेश्चन करना है अगले पेपर के अंदर, उसके अंदर मैं एटलीस्ट आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ट्रांसलेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने बता दी है, और उसके अंदर मैं आपको वर्टिकल स्ट्रेच नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने वर्टिकल स्ट्रेच आपको सारा बता दिया है। ये किधर गया वर्टिकल स्ट्रेच? ये है। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच मैं आपको वहां पे टीच दोबारा करूंगा, ठीक है? ओके। तो ये आपके 4 मार्क्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, भेज भी दूंगा पीडीएफ, लेकिन मैं इसलिए पिक्चर भेज रहा हूँ कि एज अ फार्मूला हमारे पास मौजूद हो ना ये पिक्चर। ओके, नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज फ्रॉम सर्कुलर मैयर।
द डायग्राम शोज अ सेक्टर ए बी सी। अच्छा बच्चों मेरे साथ आपने करना है, अहमद आपने साथ साथ करना है मेरे साथ पेपर सॉल्व, ठीक है? सुन रहे हो ना? पेपर आप साथ करेंगे मेरे साथ सॉल्व, टाइम जाया नहीं करना अपना। यस सर। The diagram shows a sector ABC of a circle with center A and radius 8. The area of the sector is this. The point D lies on the arc BC. Find the perimeter of the segment BCD. तो perimeter find करने के लिए you have to find this length and you have to find this arc. Okay. And first of all, I think we can find this theta by looking at the area of the sector. So students, area of the sector is, सेक्टर एरिया क्या होगा, क्या फार्मूला होता है? हाफ आर स्क्वायर थीटा। ऐसा ही है भैया हमें यस सर। 16 पाई/3, ये फार्मूले आपने खुद याद करने थे। और रेडियस दिया हुआ है आपको 8 स्क्वायर थीटा, सब्जेक्ट बना ले यहाँ से। तो इसको कैलकुलेटर से डायरेक्ट करते हैं। 16 टाइम 2 डिवाइडेड बाई 64, 1/2 टाइम 1/3। ओके, पाई/6। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों मेंटल मैथ लोगे तो आप बना लोगे। डायरेक्ट मैथ करने से मार्क्स तो नहीं कटेंगे जैसे हाँ नहीं नहीं, बगैर कोई नहीं लिखे? बिल्कुल नहीं कटेंगे, बिल्कुल नहीं कटेंगे, बेफिक्र हो जाइए। ठीक है। सिर्फ वो उसके केस में ना जब इक्वेशन हो हाँ, तब वो जो फैक्टराइजेशन जब खुद करनी। जी 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 जी। अच्छा थीटा आ गया पाई/6। लेट्स सी, लेट्स फाइंड आर्क बी सी। तो आर्क फाइंड करना नॉर्मली हम यूं कर देते हैं, इसको हम एल से भी डिनोट करते हैं। आर्क का फार्मूला क्या होता है? एल इज इक्वल टू आर थीटा, रिमेंबर? अच्छा बच्चों ये वही वाला फार्मूला है, वो 2 पाई आर, क्या होता था यार, पाई/360। हाँ, थीटा/360, थीटा/360 इंटू 2 पाई आर। आप लोग ये लगाते हो ना, तो एक ही बात है, ये कट जाता है, थीटा इंटू आर ही बनता है। और आपका थीटा कितना है? पाई/6। एंड व्हाट इज योर आर? योर आर इज 8। तो आंसर विल बी 4 पाई/3। ओके अहमद भाई? यस सर। सो 4 पाई/3 इज माई आर्क लेंथ। इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, 4 इंटू पाई/3। सो दिस विल बी 4.1888। सो ये आपका आ गया जी आर्क लेंथ। किसकी आर्क पेरीमीटर आई है? पेरीमीटर हम फाइंड कर लें तो ये लेंथ अभी आई है। डी। अब मुझे बताओ अहमद, ये बीसी कैसे फाइंड करोगे डायरेक्ट लेंथ? मुझे लग रहा है आई थिंक डायरेक्ट। बेस्ट है वो कॉस कोसाइन रूल अगर लगा दें, क्या ख्याल है? जी सर। तो बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा? लॉ ऑफ कोसाइन किस किस को याद है? ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बोलो बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc कॉज ऑफ एंगल, ठीक है ना? ये तो टूल्स आपको स्टूडेंट्स हर टाइम आने चाहिए, लॉ ऑफ साइन और लॉ ऑफ कोसाइन वाला, नहीं कभी भी काम आ सकता है। हारिस मेरे साथ कर रहे हो हारिस? जी सर। पेपर मेरे साथ करना है यार, मैं कल चेक करने आऊंगा स्पेशली। ए स्क्वायर किसके इक्वल होना है बच्चों? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। आई नो ये आपको आता होगा, मैं आती है ना चीज, लॉ ऑफ कोसाइन, वही लगा रहा हूँ। 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर बिकॉज दिस इज ऑल्सो 8, माइनस 2 टाइम 8 टाइम 8 टाइम कॉज ऑफ एंगल बिटवीन 8 एंड विच वॉज पाई/6। तो इसे सारा कैलकुलेटर में डालते हैं। 64 + 64 माइनस 2 टाइम 64 कॉज ऑफ, प्लीज भाई कैलकुलेटर को देख लिया करें कि डिग्री पे है या रेडियन पे है और आप पुट क्या कर रहे हैं। अब अगर हम इसमें रेडियन पुट कर रहे हैं तो कैलकुलेटर रेडियन में होना चाहिए। तो ये आता है जी आपका बी सी का स्क्वायर, एंड इफ आई टेक स्क्वायर रूट ऑन दिस, सो माई बी सी इज इक्वल्स टू 4.1411। ओके अहमद, सो पेरीमीटर क्या होगा? 4.1411 प्लस 4.1888।
So plus 4.1888. तो ये आपका स्टूडेंट्स आता है जी 8.33. Any problem, Ahmed? No, sir. Okay. Let's move to question 5. The line with equation this, k is positive number, is a tangent to the curve with equation this. So it means that this curve might be something like this, and this line is touching this curve at a single point. So whenever this situation comes, you will say that b square minus 4ac is equal to 0 to find this constant k. Remember, Ahmed? Okay. So let's equate kx minus k is equals to 1 over 2x. So kx, 2kx square minus 2kx plus 1 equal to 0. So a is 2k, b is minus 2k, c is 1. So b square minus 4ac equals to 0. So minus 2k whole square minus 4 times 2k times 1 is equal to 0. So 4k square minus 8k equal to 0. Take maximum things common. So 4k into k minus 2 equals to 0. So k is 0 and k is 2. So if you look at this statement where k is a positive constant, so Ahmed, will you accept this k is equal to 0? K0 falls in positive constant category or not? Huh? No, sir. So you will only take k is equals to 2 and write only word categorically, okay? If you are confident enough. So बच्चों k is equal to 2 only. Next, they are saying that find in either order the value of the k and the coordinates of the point where the tangent meets the curve. So students, आप draw कर लिया करो curve ना. तो ये बात हो रही है that you need to find this coordinate as well. So let's put this value of k here and okay, and then again solve this line with this curve. So it's better to do to put this value here because this equation is actually simultaneous equation. So let's put this value of k in the above equation. So 4x square minus 4x plus 1 equal to 0. So now you can use a quadratic formula. So I'm going to use the calculator. Still, students, you can use calculator to write answer directly. Do not waste your time for 1 or 2 marks. 4 minus 4 plus 1. X is equals to 1 over 2. Okay, so you have only 1 point. X is equal to 1 over 2. And then to find the second coordinate, what you will do? What was your line? Kx minus k. So k is 2, 2x minus 2. So 2 times 1 over 2 minus 2. So this will be 1 minus 2 will be minus 1. So your point at which the above line is tangent to the above curve is this. Student, this is your point at which this line is tangent to this curve. This point has coordinates 1 over 2, minus 1. बताएं हमें मसला है कोई तो पूछें बच्चों. Am I clear? Haris clear? Shan? Yes, sir. Okay. So the first 3 terms of an arithmetic progression are given. Given that the common difference of the progression is not 0. Student, जो extra statement दी होती है ना, it will definitely have some meaning. Why they are saying that given that the common difference for the progression is not 0? I don't understand the uh, idea behind this statement. But let's find, first of all, let's find this p. Find the value of p, and then later on we will see that why they are saying this thing. So, Ahmed, अगर
if these terms are the terms of arithmetic progression, so what's special in that? If you take common difference of first two terms, or you can take common difference of the next two terms, what you will say, Ahmed? Are they equal or not? हाँ भाई, देखे ना, कॉमन डिफरेंस आप जो मर्जी लें, चाहे यहां से लें इन दोनों में से, चाहे यहां से लें, तो दे विल बी सेम बिकॉज दिस इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हारिस, यस और नो प्लीज बताएं। शाहिर, ठीक है, तो ये बात बच्चों इक्वल होगी ना दोनों? क्लियर होगी बात? ये अहमद, बात क्लियर है? प्लीज बताओ। यस सर। सो p minus 2p plus 6, so p minus 2p will be minus p, तो इधर आएगा 3p हो जाएगा, and 3p minus p square over 6, so bring 6 on the left side. This will become 12 equal to 0 multiplied with 6, so this will be 18 p minus p square. 12 6 are 72 equal to 0. So this is a quadratic equation. Minus 1, 18 minus 72. So p has value 12 and 6. Okay. So students, we have two values of p. So what it seems to me that both are correct, but it's not. Students, if you look at this, given that the common difference of the progression is not 0, and let's try this value by putting this, let's try this value of p is equal to 6 here in this common difference. So this is the common difference, okay? So this is the common difference. So if you put, let's say, 6 in that, so you will get 6 minus 2 times 6 minus 6. So 6 minus 12 minus 6 will be 6. So 6 minus 6 will be 0. So Ahmed Hamid, ये तो common difference 0 आ गया. So will you यस accept सर। this value of p? नहीं सर, 12 होगी। ओके, तो ये देखिए बड़ी अजीब सी बात है, ये बच्चे करके भी मुझे कंफर्म पता है आपके 2 मार्क्स आने हैं पेपर के अंदर, क्योंकि आपने दोनों को ठीक कर देना है, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो इट विल डेफिनेटली हैव सम मीनिंग. सो यू विल राइट p इज इक्वल टू 12 व्हाट ओनली. दूसरे को चेक करने की जरूरत नहीं है, डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अगर देखे ना, एक अगर गलत होगी है, एक एक्सेप्ट नहीं है, तो दूसरी तो एटलीस्ट होगी. ऑल्दो इट्स आल्सो तुक्का, इट्स नॉट द लॉजिक, बट हम ए लेवल्स में कर सकते हैं कि अगर एक नहीं है तो दूसरी तो चले होगी. ओके, using this value of p, using this value, find the sum to infinity of the geometric progression with first two terms this. So students, आपकी p की वैल्यू क्या है? 12. So पहली टर्म बच्चों आपकी क्या है? p square over 6. So 12 square over 6. So 12 square is 144. So 144 divided by 6 will be 24. And second term will be 2p minus 6. So p is 12, 24, and this will be 18. Okay. So what is your common ratio? Your common ratio is second term divided by first term. So second term is 18 and divided by first term. So this will be 3 divided by 4. Okay. So the sum of infinite terms formula is S infinity is equal to first term over 1 minus common ratio. So first term is your 24 and your common ratio is 3 by 4. So 24, 4 minus 3 will be just 1 over 4. So this will be 98. अच्छा बच्चों, 96, sorry. Ahmed, is there any problem? नो सर। Ahmed, clear? जी सर। Okay. Question number blank page. Okay. Question number 7.
A curve has equation. So state greatest and least values of y. Sketch the curve. Students, it has two ways, like there are two ways to give the answer for first part. Let's do the second part first, okay? Forget about the first part and let's come to the sketch the curve. So how you will sketch these type of graphs? So students, first of all, um, let me tell you in a proper way. First, just think of the graph sine y is equal to sine x. I am just think about the graph of y is equal to sine x. I hope आप सबको पता है कि the graph of sine x looks like this. ऐसे ही है. हाँ बच्चों. And I hope आप सबको पता है कि this ranges from 0 to 2 pi. ऐसे ही है बच्चों कि 0 से 2 pi की range होती है. So this is your first concept. Concept number 2 says that if you have a different angle like x by 2. So students, the original y is equal to sine x has periodic 2 pi. Okay, it's a periodic function with period 2 pi. And let's say if your function is y is equal to sine x by 2, so what will be the period of this y is equal to sine x by 2? So let me tell you the exact formula. Student, this is the formula. So whenever you want to find period of some new function, let's divide the coefficient of x. So if it is sine x by 2, it is actually sine half x. So this is the coefficient of x. So if you want to find the period of this function, let's divide this coefficient with 2 pi. This is the fixed formula. 2 pi divided by the coefficient. So you can see that 2 over 2 pi over 1 over 2 is just 4 pi. So students, this function has period 4 pi. And what is the meaning of this period? What is the meaning of this period? The meaning of period is when you will draw the graph, so it will complete its loop. It will complete its loop from 0 till 4 pi. Or you can say that this graph will be stretched like this. Now this middle point is not pi, but it's 2 pi. Before that, it was in original question, it was pi. So this is the graph of this y is equal to sine x by 2. Okay. Now look at this 3 number. What this 3 will affect? What this 3 will do? So students, if we have a 3 here, okay, if we have a 3 with sine x by 2, it will actually increase its amplitude. So let's say this number is 3 and the lowest height is -3. I hope you understand this easily. Okay. If you have a 3 here, then your peak will be 3 and the lowest height will be -3. Okay. And now what is the meaning of this 2? You will actually see this graph in this way. 3 times sine x by 2 plus 2. Okay. Do not read 2 first. Read this function in this way. Y is equal to 3 sine x by 2 plus 2. So now plus 2, just remember in some previous question, if you add or subtract in whole function some number, the graph will shifted or translated that units upward direction. Okay, Ahmed? अगर आप add कर रहे हो तो your graph will be shifted 2 units upward. And this is known as vertical translation. Okay, Ahmed? So Yes, sir. now I'm going to combine all these things to just earn 2 marks. Okay, this is by the way concept. Okay, so I'm going to translate this graph 2 units up, and you will help me, students. 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4. That's it. One more thing, students. Ahmed, this position is known as mean position. Actually, it will divide the curve into equal parts. Okay, it will divide the graph. So if you shift this graph,
2 units up, होगा क्या? My starting point will be 2. Previously, my ending point was 3, but this time my ending point will be, bolo Ahmed, 5. Okay, my ending point will be 5. मैं बना देता हूँ, बल्कि यार एक मिनट रुक जाए, मैं ना इसको बना देता हूँ इधर. This blue graph is actually y is equal to 3 sine x by 2, but this is not my question. So you have to shift 2 unit. You have to shift this blue graph 2 units upward. Okay, so 2 units up here, and then this point will be here. This turning point will be, this is -3, so this is -2, this is -1, and this 4 pi will be, okay. So students, ये आपका होगा जी ग्राफ. Okay, Amit. This yellow graph, ये क्या हुआ? This yellow graph is actually graph of your curve. Okay, बच्चों प्लीज बताएं, टाइम सेव करें ताकि हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं सारी एक्सप्लेनेशन ही दूंगा. ओके, तो ये दिस इज नॉट पार्ट ऑफ योर सॉल्यूशन, दिस इज जस्ट द मेंटल मैथ. सो नाउ जस्ट इरेज दिस ब्लू पार्ट. ये आप ब्लू बुला के ना आ जाना, वहां पे नंबर डिडक्ट हो जाएंगे. ये आपका येलो ग्राफ है. अब मुझे कौन बताएगा व्हाट इज द आंसर फॉर फर्स्ट, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट हाइट अचीव बाय दिस ग्राफ? हाँ अहमद. 5 से एंड व्हाट इज द लोएस्ट वन? -1. So greatest is 5, least is -1. And what is period? What is the period of this thing? कितने? हाँ अहमद, 4 पाई है ना पीरियड इसका. जी सर, 4 पाई. Okay, so state the number of solutions of the equation y is equal to, if you look at this curve, y is equal to -2x plus 5. Ahmed, what is this? This is a straight line with gradient -2. So let's find some 2 points on this line. So if you put x0, you will get y5. And let's say if you put y0, you will get x 2.5. बच्चों आप सबको ग्राफ ड्रॉ करना आता है ना स्ट्रेट लाइन का? हाँ अहमद. To draw the graph of straight line, we need minimum 2 points. That's it. So where is 0, 5? 0, 5, you have, here you have 0, 5, and then 2.5 comma 0 will be just before pi. So let's say this is your point. So now let's join these points. So बच्चों कौन कौन agree करता है that this is the graph of this straight line? Ahmed, makes sense? So now tell me how many times the line and graph are intersecting each other? Bolo Ahmed. Once. Only one. So state the number of solution. Only one solution. Okay, only one solution. The function g, f and g are defined as follow, where a and b are constants, given that f of 7 is 5 by 2. So f of 7, first of all, you will find it 1 plus 2a divided by 7 minus a, and it is 5 over 2 is equal to 1 plus 2a over 7 minus a. So let's take its LCM. 7 minus a plus 2a over 7 minus a. So 5 over 2 is equals to 7 plus a over 7 minus a. Now you can cross multiply. 35 minus 5a is equal to 14 plus 2a. So
35 minus 14 will be 21 is equal to 2 plus 5, 7a. So your value of a is 3. Okay. Now GF at 4 is at 5 is 4. So let's find the composite function g of f first. So what is GF? GF means you will put this f, you will put the next function in the previous one. Okay. In order to find the composition of functions, what you will find, how you will find GF of x, you will put f in previous function. So what is your f? This is your f, Ahmed. So you will put this f here in x. So in that way, you will find g of f. So g of f will be b times 1 plus 2a divided by x minus a minus 2. I hope ये अहमद बात आपको समझ तो आ गई है बच्चों, क्या ख्याल है? Now you will definitely put 5 here because you will put 5 here and left side will become 4 because GF at 5 is 4. So b times 1 plus 2a over 5 minus a minus 2. So your a is 3. So use that value. 4 is equal to b into 1 plus 6 over 2 minus 2. So 4 is equal to b times 4 minus 2. 6 over 4 is equal to b. So b is 3 by 2. So b is 3 by 2. For the rest of this question, you should use the value of a, which you found in part 1. Find domain of F inverse. Again, there is a small concept in this question. Student, although the domain and range has only 1 or 2 marks in the question, but sometimes it's very easy. But in this question, it's like difficult to find the domain and range because in this question, you don't have the simple function like quadratic function. Okay, you have a rational function like in fraction form. So let me tell you, for the you should use the. So let me tell you, your student's value of a was 3 and your function was f of x equals to 1 plus 6 over x minus 3 by using the value of a. Now, there is a concept that if you want to find the domain of f inverse is actually range of f. Okay, and range of f, if you want to find the range of f, okay, so if you want to find the range of f, you will see the behavior of this thing by randomly putting these values, because this x greater than 3 is your domain of what? This. श्योर नहीं करना चाहिए. Okay. So range of f will be, you will see the behavior of this function by randomly taking the values greater than 3. So if you, let's take the value greater than 3, like 10, and you will put here. So 10 minus 3 will be 7. So 6 over 7 will give you something. So whenever you, whatever value you will take here, the smallest value of f of x will be this one. Okay. So the range of f will be, y greater than or equal to 1. Sorry, y greater than 1. Why not equal? Because you cannot take this 3 exactly to make it 0. So
the range of f is always greater than 1. So again, your domain will also greater than 1. But as you know that domain variable is x, so you will write x is greater than 1. Okay. Now find an expression for f inverse of x. This is just a piece of cake. So what is your f of x? What is your f of x? Your f of x is 1 plus 6 over x minus 3. So x minus 3 plus 6 over x minus 3. So this will become x plus 3 over x minus 3. Let's equate it to y. Now make x as subject. So yx minus y3 is equals to x plus 3. So yx minus x is equal to 3 plus 3y. So x is into y minus 1 is equal to 3 plus 3y. So x is equal to 3 plus 3y divided by y minus 1. So just replace x with y, interchange x with y. So this will be your f inverse of x. 3 plus 3x divided by x minus 1. So this is the inverse of f inverse of x. Okay, question 9 now. Water is poured into a tank at a constant rate of this. So it means that dV by dt, the rate of change of volume is given. So it is 500. The depth of the water in the tank t seconds after filling start is h. When the depth of the water in the tank is h, the volume V of the water in the tank is given by the formula. So volume is given 4 by 3, 25 plus h whole cube minus 62500 divided by 3. Find the rate at which h is increasing. So you need to find dh over dt. So dh over dt can be written as dh over here dt, and then you will fill this bracket, this space with dv. Okay. Now let's find these two quantities, dh over dv. How you will find dh over dv? You will take derivative of v with respect to h. So if you take derivative of v with respect to h, this will be 4 over 3, 3 times 25 plus h whole square minus 0. So 3 will be cancelled out. 4 times 25 plus h whole square. So dv by dh is given 4 times 25 plus h whole square. Now use the value of h as 100. So 4 into 25 plus 10, sorry. So 35 square times 4 will be 4900. So dh over dt is equal to dh over dv, which is 1 over 4900 into dv by dt, which is given in the question, 500. So this will be 5 over 49. So this is the rate of change of h. Find the rate at which h is increasing. So this is the rate of change of h. At another instant, the rate at which h is increasing is, so this time you have given dh over dt 0.075. Find the value of v. You will find value of v. Also, the rate of change of volume is given, and that was 500. And also, you have given v is equals to 4 by 3, 25 plus h whole cube minus 62500 divided by
3. And its derivative, we know that it was 4 times 25 plus h whole square. So this is the data you have given already. So this is the already given data. So let's apply now chain rule. dv by dt is equals to, we can write it as dv by dh time dh over dt. So dv over dt is given, that is 500, and dv over dh is also given, and that is 4 times 25 plus h whole square, and dh over dt is given 0.075. Let's find h from this equation. So 500 divided by 0.075 divided by 4 under root answer. So 25 plus h is equals to 40.8248. So minus 25. So this will be your h, 15.8248. And now you can put this value in 4 by 3. 25 plus 15.8248 whole cube minus 62500 divided by 3. So 4 over 3 times 25 plus 15.8248 whole cube minus 62500 divided by 3. So volume will be 69888. This is value of V. Okay, Madhavi. Yes, sir. The next question is question 10. Most important, integration. The diagram shows part of the curve with the equation this and parts of the lines. The curve passes through the points A and B. Find the exact volume generated when the shaded region is rotated 360 degree about the x-axis. Student, as you know that the formula for volume is, if you rotate any curve with about x-axis, is pi time y square dx. So this formula you will use and you rotate some graph about x-axis, and the other formula is pi into x square dy if you rotate some graph about y-axis. Okay, but this time we are rotating shaded thing about x-axis. Again, you will, student, notice that what is the minimum like value of x on x-axis of the shaded thing. So obviously you can see that this value of x is minimum. So this will be my lower limit of integral. Okay. And what is the maximum value of x on x-axis of the shaded area? This is the maximum value, and that is 3 by 2. Okay. So this will be my upper limit. Now, if we like integrate, and what this integral will give me in this diagram. So students, let me tell you that if you reflect this graph in x-axis, what will happen? So student, this is the shaded area. This is the reflection of above graph. Okay.
So if you like rotate this curve in x-axis, so what you will see, you will see this type of cylinder, like cylindrical shape. Okay, so you will see this type of cylindrical shape here. But as you know that not all the volume is needed. Okay, you don't need all the volume. So what is the extra part? This is actually extra part, student. This part is your extra part, and you can clearly see that this is now a small cylinder. This part is now a small cylinder. And what is the radius of this cylinder? Very simple. What is the radius of this cylinder? 1. And what is the height of this cylinder? Very simple. 3 by 2 minus lower limit. So radius will be 1 and h will be 3 by 2. Upper limit minus lower limit will be 1 over 2. So you will subtract the volume of this small cylinder from above integral to find the volume. Okay, and the volume for cylinder will be pi r square h. So pi r square times h. अहमद मुझे आप बताओ ये बात पे हुई है नहीं, so that we can move forward. हाँ अहमद, क्लियर हुई ये बात? अहमद कोई और बच्चा मुझे बता दे, पिक होगी तो आगे चलें बच्चों में, हम चलें, ठीक है? तो डायग्राम आप समझ लें, बाकी आसान ही होता है. वॉल्यूम इज इक्वल टू pi times 1 2 3 by 2 y square dx minus pi by 2. Okay, so what is y? Y is 4 over 2x minus 1 whole square and then square on it dx minus pi by 2. So pi times 1 2 3 by 2 brings 16 outside the integral by taking its square, 16 pi, and then 2x minus 1 whole power minus 4, 2 multiplied with 2, and then 16 pi 2x minus 1 power 5 whole divided by 5 times the derivative of inside, which is 2, 1 2 3 by 2 minus pi by 2. So 16 pi over 10, and then sorry student, it's not 5. Yes, it's not 5, it's actually minus 3. से Because माइनस the 5/2 किस लिए था? minus 5 by 2, ये कहाँ से जी, पढ़ लिया आपने? pi/2 अच्छा, माइनस पाई बाय 2 किस लिए था? अहमद, मैं बता रहा था, देखो कि ये जो आप इंटीग्रल कर रहे हो ना, ये वाला, जी सर। ये जो आप इंटीग्रल कर रहे हो, ये जो तब होता ना, चलो मैं आपको बता देता हूँ कि इस इंटीग्रल का मतलब क्या है. अगर पेपर के अंदर क्वेश्चन इस तरह का होता कि चलो यार, ये एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन आता है इस तरह, हाँ अहमद, ये सारा शेड हुआ होता इसके नीचे वाला, एंड दे से कि इफ द शेडेड थिंग इज रोटेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो हाउ विच टाइप ऑफ थिंग यू विल सी. तो आप अगर आप इसको रोटेट करते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, तो आपको यूं नजर आता ना. जी सर। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर तो क्वेश्चन होता है ये, इसका वॉल्यूम ये आता है एंड इट इज 100% करेक्ट. बट ऐसा नहीं है, पूरा शेडेड नहीं है, जस्ट एक पार्ट शेडेड है. तो उससे ठीक। नीचे जो चीज थी वो मैंने डिलीट करना चाहता हूँ. अब वो मैं कैसे कर रहा हूँ मैं बताता हूँ.
मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार देखो, आप जरा इसको गौर से देखें ना, ये एक चीज क्या बन रही है, क्योंकि आपकी तो लिमिट सी 3/2, इससे आगे तो आपने देखना ही नहीं है ना, इसको तो देखना ही नहीं है आपने, क्योंकि आपकी लिमिट ही 3/2 है, क्योंकि आपने जस्ट शेडेड थिंग को रिक्रिएट करना है। तो मैं कह रहा था कि ये क्या बन रही है ये वाली चीज, इसको मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे लिख दिया। तो एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है ये, जो कि 1 है, और जिसकी हाइट क्या है, सिलेंडर की लेंथ। और वो कैसे निकलेगी, वो ऐसे निकलेगी कि ये आपकी 1 है और ये आपकी क्या है, 3/2 है। तो 3/2 और 1 का मैंने डिफरेंस लिया है, तो 1/2, तो ये सिलेंडर की हाइट आ जाएगी। ये सिलेंडर की हाइट है 1/2 और रेडियस 1 है। तो मैं कह रहा था कि उसको हमने सब्ट्रैक्ट करना है ओरिजिनल वॉल्यूम से, इंटीग्रल से। क्लियर है? यस। तो यही मैं कर रहा था। और सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h होता है ना, πr²h। तो पाई इंटू आर आपका 1 था और एच आपका 1/2 था, तो π/2 बनता है। अब हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होगी थी यहाँ पे, बिकॉज इंटीग्रल की पावर थी -4। अच्छा, तो ये आएगा जी -6, एंड देन वी हैव 1/2x - 1 होल पावर 3 power 1, the limits are from 1 to 3/2 minus π/2. Now -8π/3, upper limit will be 1 over 2 into 3/2 will be just 3, 3 minus 1, 2, 2 cube will be 8. So this is the upper limit, minus lower limit will be just 1. थोड़ा अहमद, आप थोड़ा सा गौर से देखने से हो जाएगा इजीली ना। अगर आप ये 3/2 पुट कर रहे हो तो कैलकुलेटर से यहाँ पे 3/2 पुट करो, 2 2 से कटेगा, एंड 3 minus 1 will be 2, 2 cube will be 8, so 1/8। ठीक है, तो ये हो जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। तो -8π/3, so -7/8 minus π/2, so this will be cancel out, 7π/3 minus π/2, so 7/3, 7/3 minus 1/2, so 11π/6. So this is your required volume of revolution. तो If इसमें you दोनों repeat, लिमिट्स लगा दी, 3/2 और 1। हाँ तो ये एग्जैक्टली यही हाँ आता है ठीक ना। ठीक ठीक। ठीक है, वन तो का इलेवन वन ही पाई बाई आएगा। सिक्स हाँ हाँ, सही 1 से 1 ही है, देख। सही सही। मैं तो मेंटली कर रहा हूँ, आप भी कर लें, हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, क्योंकि बच्चों से ना ये इमेजिन नहीं हो पाती, बच्चे कैन नॉट इमेजिन दिस कर्व मेंटली। तो अ ट्राइंगल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टेंजेंट टू द कर्व एट बी, द नॉर्मल टू द कर्व एट बी, एंड द एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। अब एक नया प्रॉब्लम इकट्ठा हो गया भाई। सो लेट मी, we can copy this diagram here. So ये आपका क्वेश्चन था। तो okay, now students read this question. A triangle is formed from the tangent to the curve at P, the normal to the curve at B. So let's draw a tangent to the curve at P. So this is the tangent to the curve at B. Okay, now normal to the curve at B. Again draw a normal to the curve at B. So this is my point B. Just forget about this y-axis for now, so that you cannot think कि ये origin से गुजर रहा है। ओके, origin को भूल जाओ।
Just imagine कि अब ये triangle बन गई है, and this is your triangle, students. So you need to find the area of this triangle. Okay. So my function is y is equals to 4 times 2x minus 1 power minus 2. अहमद यार ये गौर से देखना बेटा, dy by dx इसका डेरिवेटिव क्या आता है? -8 times 2x minus 1 power minus 3 into 2. So derivative will be minus 16 into 2x minus 1 power minus 3. Clear है अहमद? जैसे इसका अच्छा, ग्रेडियंट। हाँ, इसका ग्रेडियंट निकालते हैं किसका? टेंजेंट का। ये टेंजेंट है और ये नॉर्मल है। टेंजेंट का ग्रेडियंट निकालने से पहले हम इसके अंदर 3/2 पुट करेंगे। तो -16 इंटू 3/2, 2 से कट जाएगा, 3 - 1 विल बी 2, so 2 raised to power -3 and that is 1/8, so -2. This is the gradient of what? उसका 1/2 Gradient of, होगा नॉर्मल का। हाँ, तो ये होगा जी 1/2 the gradient of normal. Let's find first of all the tangent. So tangent line will be y minus 1 is equal to -2 times x minus 3/2. The formula of the equation of tangent, equation of line. ठीक है? Actually, we don't need the equation of tangent. We just need this value, this coordinate. So how I find this coordinate? Huh, Emma? Can I put y0 to find value of x? Huh? X intercept find करना है ना? जैसे So -1 is equals to -2 into x minus 3/2. So bring 2 on the left side. 1/2 plus 3/2 will be 2. 4/2, that is 2. So this is my equation. This is my value of x. और ये value of x कहाँ पे है अहमद भाई? ये पड़ी हुई है, नजर आ रही है? ये जो है ना, ये x की वैल्यू है. Now I am interested in this value of x, कि ये क्या होगी. So how do I find that? पहले मैं क्या करूँगा? नॉर्मल फाइंड करूँगा. So y minus 1 is equal to equation of normal was 1/2 x minus 3/2. Again, do not solve it and put y0. So you will get -1 is equal to 1/2 x minus 3/2. Bring 2 on the other side, -2 plus 3/2. So -2 plus 3/2 will be -1 minus 1/2. So -1/2. Ahmed, what is the difference between this? What is this length? If the next point is 2 and the previous is -1/2. What is this difference? हाँ भाई, next point is 0, 2. Oh, sorry, 2, 0. And previous point is -1/2, 0. So what will be the length? 1/2 plus 2. ऐसे ही है भाई, जैसे या वैसे कर लो, 2 minus 1/2 minus -1/2. So that will be, 3/2। नहीं भाई, क्या कर रहे हो? 2 plus 1/2 करना ना, मतलब क्या कर रहे हो? हाँ सही है। ये बात समझ हाँ आई है? लेंथ हम कर रहे हैं ना जी उसमें, जी उसको जी। तो अब ये हो गया, तो अब एरिया क्या होगा ट्राइंगल का? 1/2, बेस क्या है आपकी? यही है, और हाइट क्या है ट्राइंगल की? हु विल टेल मी व्हाट इज दिस हाइट? ये वाली 1। 1. So net area of triangle will be 5/4. देख लीजिए. Find the area of this triangle. Clear है? Clear, Ahmed? जैसे Okay. The next question is, the equation of a curve is such that this, where a is a positive constant, the curve has a stationary point. So find the value of a. So curve has a stationary point. It means that a derivative is also given. So 6a square minus 30a plus 6a equal to 0. Okay, derivative is given, so I'm just putting derivative equal to 0. 6a square minus 24a equal to 0. Take 6a common.
So a minus 4 equal to 0. So a 0 and a 4. As it is given that a is a positive constant, so you will take a is equal to 4 only. Clear? Yes, sir. Determine the nature of this stationary point. So how to check the nature? Double You derivative. will take, yes. Let's write the first derivative here. So dy by dx is equals to 6x square minus 30x plus 6a. So 24 now. Let's take its second derivative. 12x minus 30. So what is your x? Your x is a and that is 4. Okay. 48 minus 30 will be 18. अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव हो तो क्या होता है? Minimum. अहमद क्या होता है? Minimum. Is minimum point. Find the equation of the curve. Again, you know that if you want to find equation of curve from derivative, so what you will do, you will actually integrate it. So integrate करें 6x cube over 3 minus 30x square over 2 plus 24x plus constant of integration. Now, the point is given on the curve, and that is, what was the point? Minus 15 is equal to 6 times 4 cube over 3. So 2 times 4 cube minus 15 times 4 square plus 24 times 4 plus c. So minus 15 minus 2 times 4 cube plus 15 times 16 minus 24 times 4. So students, value of c is 1. So equation of curve will be y is equals to 2x cube minus 15x square plus 24x plus 1. So this is your equation of curve. Am I clear? Yes, sir. Find the coordinates of any other stationary point on the curve. Any other stationary point on the curve. Okay. If we find derivative of this, that will be 6x square minus 30x plus 24. That was derivative. Student, अगर हम इसको 0 पुट करके स्टेशनरी पॉइंट निकालें तो क्या आता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 6 minus 30 24 x is 1 and x is 4. एक और आ गया ना अहमद? So Yes, sir. इसको पुट कर दें ऊपर 2 into 1 cube minus 15 into 1 square plus 24 times 1 plus 1. So y is equals to 2 minus 15 will be minus 13 minus 13 plus 24 plus 1 will be 12. So the other point is 1 comma 12. Clear, Ahmed? The last question. The diagram shows a circle with circle P. Two circles are given and its center is also given 0 comma 2. Ahmed, ये मैंने आपको कल करवाया था, याद भी होगा आपको. And radius is 10. And the tangent to the circle at the point A with coordinates 6 comma 10
It also shows a second circle Q with center at the point where this tangent meet the y-axis and with radius this. Write down the equation of circle P. अहमद मेरे भाई, अगर आपको इक्वेशन सर्कल P की सेंटर दिया हुआ है एंड दैट इज x-0 का स्क्वायर प्लस y-2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर, तो क्या ये बात आपको समझ आती है अहमद? यस सर। ये है इक्वेशन ऑफ सर्कल P. नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल P एट A. अब वो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन. सो एज यू ऑल नो दैट what is the gradient of this radius? So the gradient of the radius is 10 minus 2 over 6 minus 0. So that will be 8 over 6 and that will be 4 over 3. तो tangent का gradient क्या होगा अहमद? 3/4 -3/4 Minus 3 by 4. So equation of that tangent will be y minus 10 is equals to minus 3 by 4 times x minus 6. So find the equation of tangent to the circle at P. So y is equals to minus 3 by 4x plus 18 over 4 plus 10. ठीक है? Find the equation of the tangent to the curve. So that will be y is equals to minus 3 by 4x plus 29 over 2. Find the equation of a circle Q and hence verify that the y coordinate of both of the points of the intersection of two circles are 11. So as you are given now equation of tangent, and that is equation of tangent is minus c over 4x plus 29 over 2. Okay, so if you put x0, you will definitely get y 29 over 2. So the center of the smallest circle is 0, 29 over 2. Clear, Ahmed? Okay. And also the radius of the smallest circle is given. This is the radius of small circle Q. This is the radius of small circle Q. So x minus 0 whole square plus y minus 29 over 2 whole square is equal to 5 over 2 root 5 whole square. So x square plus y minus 29 over 2 is equals to 25 times 5 125 over 4. So this is the equation of circle Q. Also students, hence verify that the y coordinate of both of the points of the intersection of two circles are 11. So student, this is circle Q and this is your circle y minus 2. Square is equal to 100. So you need to solve these circles simultaneously to get the value of y. How? Let's make x subject from the first equation. So 125 over 4 minus y minus 29 over 2 whole square. And then x square is equal to 100 minus y minus 2 whole square. Let's equate these x, let's eliminate these x and find a value of y by equating these two curves simultaneously. Definitely you will get y is equals to 11.
But as you know that the marks are only 3, so actually they are not saying that you have to find the y coordinate of both the points of intersection of the circle. Actually they are asking for this height, and they have given this height 11. We just make sure, we just need to like make sure that whether it's true or false. So let's try by putting by putting y is equal to 11 here in both cases, and let's see, will they give the both answer, will they both give the same answer. So first one will give me x square plus 11 minus 29 over 2 whole square is equal to 125 over 4. So that means 11 minus 29, 11 minus 29 over 2, square on it, and then 125 over 4 minus answer. So x square is equal to 19 given by the first circle, and again x square plus 11 minus 2 whole square is equal to 100. Let's see what will give me, what it will give me. So 11 minus 2 is 9, 9 square is 81. So 100 minus 81 is again 19. So x square is equal to 19. So yes. So you will say yes. Y is equal to 11 is the whatever he asked is the y coordinate of, is the y coordinate of points of intersection. Okay. So this is the other way and shortcut way. Now the last part is find the coordinates of the points of intersection of the tangent and circle Q given the answers in third form. Now, where is my equation of tangent? Equation of tangent was minus 3 by 4x plus 29 over 2, and the circle Q was x square plus y minus 29 over 2 whole square is equal to 125 over 4. Let's put this value of y here. These days, students do not do hard work, and whenever they see some like long steps question, especially हारिस मेरा वेट कर रहे हो कि सर करें या खुद कर रहे हो कुछ? हारिस, कैन यू हियर मी? सही कह रहे हो सारे। अच्छा, तो ये देखें जी, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस साइमल्टेनियसली by putting this value of y here. This will be cancel out. So x square plus 9x square over 16 cancel out is equals to 125 over 4. So 16 plus 9 will be 25. X square is equal to 125 over 4. So x square is 125 into 16 divided by 25 times 4. 125 times 16. 25 times 4 will be 20. So x will be plus minus root 20. So again, you can write it as plus minus 2 root 5, because 20 can be written as 4 times 5. So plus minus, then you will use these values above, minus 3 by 4 times 2 root 5 plus 29 over 2. So this will be your answer.
minus 3 root 5 over 2 plus 29 over 2. And second will be minus 3 over 4 minus 2 root 5 plus 29 over 2. And that will be 3 root 5 over 2 plus 29 over 2. Coordinates. So you have to write these points in the form of points 2 root 5 comma minus 3 5 over 2 plus 29 over 2. And the second point was minus 2 root 5 comma 3 root 5 over 2 plus 29 over 2. So student, this was the end of first paper 1-1. Just give me few minutes break. Inshallah, we will solve another paper 1-2. Or you can leave the meeting. I will just send you link in 10 to 20 minutes. Okay. And we will start the next paper, May, June 1-2, 2023. I'm also sending you this PDF, the PDF of this paper. Okay, students, Allah Hafiz.